Hi guys, in the last video we had seen PIT Regulating Act of 1773. In this video we are going to talk about PITS India Act of 1784 as you can see on your screen. So PITS India Act of 1784 basically came into existence because there were certain flaws in Regulating Act of 1773 and it didn't give the kind of output that the British government was expecting. So what were the provisions of PITS India Act? First we will see that, and after that we will see that it resulted basically in dual control or joint government shared by the British Crown and as well as the East India Company. So from one hand, or one part of the government in India was being managed by the Crown and one part being managed by the East India Company. So there was a kind of dual control or joint government. Okay, and the Crown was enjoying the superior power over the East India Company regarding the affairs of the company in India. Okay, so let's talk about the key provisions of the PITS India Act of 1784. First was that a new board of control was created. Okay, we will talk about it more, and Governor General and Council was kind of changed a bit, and we'll talk about that also. And Presidency of Calcutta, or you can say Governor of Calcutta or Bengal, was given more powers. There was provision of a secret committee and then disclosing of property. Okay, and one more thing that we have to note it down is that PITS India Act of 1784 kind of separated commercial and political functions of the company. And who got the commercial part, we will see that as well, and who got the political part, we will see that as well. So basically the relationship between company and crown established by the PITS India Act of 1784 kept changing with time, and these provisions were changing almost every 20 years, with a new act coming into the picture almost every 20 years. If you add 20 you will get that first 1793 में आएगा, फिर इसके बाद और उसके बाद जो आएगा फिर उसमें 2020 ऐड करते जाएंगे तो विल गेट 1813 एंड देन 1833 एंड देन 1853. तो ये 1858 तक जो है आपका ये इसमें प्रोविजन में चेंज करते रहेंगे कुछ ना कुछ. तो नो एक्ट इज गिविंग यू द सॉलिड पिक्चर कि हाँ अब यही रहने वाला है, तो ऐसा अभी तक नहीं कोई एक्ट आएगा. ठीक है, तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का कुछ पार्ट. अब आगे बढ़ते हैं. अब डुअल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे. डुअल जो आपका कंट्रोल हुआ था उसमें कैसे क्या चीज़ मैनेज हो रही थी वो देख लेते हैं. देखिए, एक तो पार्ट जो है कंपनी हैंडल कर रही थी और दूसरा जो है क्राउन हैंडल कर रहा था. कंपनी किसके थ्रू हैंडल करती थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. आपको पता होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर 24 इन नंबर्स. ओके, एंड दे वर इलेक्टेड बाय shareholders of the company or the proprietors of the company. Okay, and the crown was being crown was kind of managing the affairs of the East India Company back in India by, or you can say, via the medium of board of control. So PITS India एक्ट के केस में ही आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इससे पहले नहीं था ये एग्जिस्टेंस में. पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू आया एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड 6 members. वी विल सी दोज members as well, so don't worry about that. Okay, so board of control had the authority over political affairs, okay, or you can say the administrative affairs, and company via code of directors had the अथॉरिटी ओवर कमर्शियल अफेयर्स. तो इस तरह से दो पार्ट्स में बांट दिया. तो क्राउन जो है अब ज़्यादा कंट्रोल अख्तियार कर लिया था उसने कंपनी पे, और पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स को अलग कर दिया गया. पॉलिटिकल अफेयर्स किसके हिस्से में आया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि क्राउन के हिस्से में, और मैनेज ऑफ कमर्शियल अफेयर आया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के खित्ते में. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके अंदर था? कंपनी का पार्ट था. ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस इज कॉल्ड द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल? लेट्स टॉक अबाउट इट. This was the board of control. It had 6 members. One was chancellor or a chancellor of the exchequer, and another was secretary of state. The secretary of state was the main head of this board of control. Okay, these
वर द 6 members इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 2 members हमने देख लिए, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. और ये जो 4 members थे, दे वर द 4 प्रिवी काउंसलर्स नॉमिनेटेड बाय द किंग्स. सो दीज वर द 4 प्रिवी काउंसलर्स नॉमिनेटेड बाय द किंग. एंड व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज empowered to control all the matters of civil or military government or revenues. It was given full access to the company's records. It had the power to send governors to India and full authority to alter them. So somehow board of control was above the court of directors because they were mainly focused on the political and administrative affairs of the company in India. Okay, now अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में क्या अंतर हुआ वो देख लेते हैं. पहले हमने देखा था 1773 के एक्ट में कि आपका बेसिकली गवर्नर जनरल में वो उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स था और उसमें जो 4 मेंबर्स थे आपके उसकी काउंसिल में, लेकिन अब क्या किया कि उसकी संख्या रिड्यूस करके 3 कर दी. ठीक है, और एक जो होगा इन 3 मेंबर्स में वो होगा कमांडर इन चीफ ऑफ द किंग्स आर्मी इन इंडिया. दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड दीज 2 वर अदर गवर्नर काउंसिल्स मेंबर्स. ओके, सो ये ऐसा क्यों किया गया, एक मेंबर रिड्यूस क्यों किया गया? क्योंकि जो 1773 का जो एक्ट था उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स जब आपका गवर्नर जनरल था, तो बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग दैट द 4 members ऑफ द काउंसिल was kind of overriding him and were not listening to him, and they even tried to impeach Warren Hastings from governorship as well. So गवर्नर जनरल की पावर के ऊपर जो है बहुत बंदिशें लग गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में. और उस टाइम पे बोला गया था कि जो 4 बंदे हैं वो जो बोलेंगे मतलब वो गवर्नर के ऊपर बाध्य होगा, मतलब he will be bound by the decision of the council of 4. okay, दैट इज वाई 1 number was reduced कि अगर गवर्नर जनरल के पास केवल एक बंदा भी इसकी सहमति में होगा तो जो है डिसीजन जो है वो पास हो जाएगा. ठीक है, तो इट वॉज समहाउ डन टू स्ट्रेंथन द पोजिशन ऑफ द गवर्नर जनरल बिकॉज नाउ ही वॉज एबल टू गेट एनी रेजोल्यूशन पास्ड इवन विद द हेल्प ऑफ 1 member in his side. Okay, governor general council was now under indirect control of the British government through the board of control. So this governor general council was also under indirect control by British government via the medium of board of control. Now we have done with the governor general in council and its composition. Okay, and there was also a provision of secret committee in the Pitt's India Act of 1784. What was the function of secret committee? First of all, it had 3 members. Okay, so as you can see here that 3 members were there, and this secret committee had to transmit the order of the board to India. ओके, सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ऑर्डर पास करती थी वो जो ऑर्डर लेके जाती थी इसको इंडिया पहुंचाना होता था इस सीक्रेट कमेटी को. एज यू कैन सी दैट ये ऑर्डर्स लिए हुए हैं हाथ में. ठीक है, दिस सीक्रेट कमेटी वाज टू वर्क एज द लिंक बिटवीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट इट वाज गोइंग टू एक्ट एज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स connecting or interconnecting link. Okay, so we are done with the secret committee. Now moving forward, so अब इसकी प्रोविजंस का एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या इसका फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ. और पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कुछ खास उसका फ़ायदा नहीं हुआ, फेलियर समझा गया इसको एक तरह से. ये कुछ रीज़न की वजह से हुआ. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोई क्लियर लाइन नहीं खींची गई गवर्नमेंट कंट्रोल के बीच में और कंपनी की पावर के बीच में, क्योंकि जो लाइन थी वो बस थ्योरीज में थी और प्रैक्टिकली वो नहीं हो रहा था. द कंपनीज पावर्स वर नेबुलस एंड हाईली सब्जेक्टिव. ओके, और सब कुछ बस रिटन थ्योरेटिकल था. हाउ इट विल बी implementing, how they will be implementing what is there in the spirit of letters. So मतलब इस तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था. तो एक तरह से जो आपका बेसिकली इट वाज नॉट गिविंग द फ्रूट दैट वाज required. Okay, the British government felt obliged to respond to humanitarian calls for better treatment of local people in British occupied territories. मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि बेसिकली जो है हेल्प करनी चाहिए लोगों की, और काइंड ऑफ एक मतलब ऊपर से मक्खन लगाने का काम भी हुआ कि जो डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ें दिखाएगी कि पीपल ऑफ इंडिया वेरी हैप्पी एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, सो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एलिज्ड फॉर नेपोटिज्म. और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था हमने देखा जिसमें 6 मेंबर थे, तो इट वाज accused of nepotism. The act was naive one. It divided the responsibility between the board of control, court of directors and the governor general in council, but again without fixing the clear cut boundaries.
So the crux of the challenge of this Pitt's India Act of 1784 was that it kind of इंटरमिक्स द पावर्स, लाइक कुछ जोन ऑफ पावर्स मेरे अंदर आ रही हैं अगर मैं गवर्नर हूँ, कुछ जोन ऑफ पावर्स आपके अंदर आ रही हैं क्योंकि आप काउंसिल के मेंबर्स हैं, ठीक है, कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को आ रही है, कुछ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्रॉब्लम आ रही है, तो बेसिकली सब कुछ जो है मिक्स हो गया है। तो गवर्नर जनरल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भी अथॉरिटी को लेके कन्फ्लिक्ट हो रहा था। और इस एक्ट के दो सबसे मेन कारण हैं जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। पहला ये कि जो कंपनी की टेरिटरीज थी इस बार 1784 में वो उनको ब्रिटिश पोजीशंस बोला गया इंडिया में, मतलब दे वो कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड सेकेंडली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट और द क्राउन बिकेम सुप्रीम ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दिस वाज ऑल अबाउट Pitt's India Act of 1784 और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1793 भी देखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड इफ यू थिंक दैट देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू आस्क और यू कैन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल।